Hi students, my name is Sarabjeet Singh and welcome to Study Khazana. Just about myself, I would like to tell you a couple of things as an intro. And, I have 12 years of corporate experience with multinational companies by profession, and I'm an MBA. And I've been teaching students different subjects, law, FM, this particular subject of business correspondence and reporting. I've been teaching to different levels, and to be just want to give that was a brief about myself. Thanks for hearing it. So just want to tell you what this particular subject is, or we'll be discussing all the aspects to it. And not only that, being English, it's something which will be just in scope for the subject, but it is actually which has a wide applicability to all the subjects, and we will discuss how that can be improved in the different subjects as well. Okay, so this particular subject, business correspondence and reporting, is a 40 marks paper. The different elements to it are communication, sentence types, and direct, indirect, active, passive speech, vocabulary, comprehension, passages, note making, introduction to basics of writing, précis writing, article writing, report writing, writing formal letters and official communication, writing formal mails, resume writing, and meetings. So wanted to tell you guys why there was a need for this particular subject to be inserted. It has been a very new subject which has been added to a CA curriculum just last year, and the reason to it is, guys, that there's a lot of technical aspect to the CA course which has been attached to. Generally, it is being assumed that if a person is doing CA, the person should be good at technical, but let me tell you guys, there is a subjectivity of everything which is being attached to. We will make this particular session interactive, and we'll make it more not only through English itself, but we'll be adding words like Hindi also to just make you more comfortable. Okay, so इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है दोस्तों? Why do we really need it? So technically हम कहते हैं कि यार a person who is doing CA, why there's a need to know, or why there is a need to understand the different aspects of the common medium of the subject, that is English. आप देखते होंगे there's a lot of information across the subject, but when you really have to talk about this subject, जैसे बहुत छोटा सा example अगर हम लें, like for example you clear your CA and you get into a good job, and you are talking about why the PBT of your company has increased, or there's a report writing on a particular segment of business, or there could be n number of things, guys. और होता क्या है, बहुत ही आसानी से आप goof up कर जाओगे, because that aspect has not been taught to you ever. अगर हम grammar की बात करें तो it has been taught to us, or all of us, somewhere in 8th standard. 8th में कहीं grammar technically correct पढ़ी होगी, but when it comes to आज के scenario, if we have to identify any grammatical mistake, it will be really hard to do, guys, because होता क्या है, God has gifted us with such a beautiful organ, that is brain, that we have read n number of articles, n number of things through books, through journals, through newspapers, which is absolutely correct grammatically, by content, by flow of thought, and by all aspects of written communication.
और रिटन मीडियम, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो आप देखोगे कि अगर आपको कोई ग्रामेटिकल एरर वाली चीज़ दे दी जाए पढ़ने के लिए, आप बहुत इजीली उसे आइडेंटिफाई कर लोगे। बट अगर आपसे कहा जाए उसके अंदर इशू क्या है, एरर क्या है, एंड इट विल बी रियली हार्ड टू फाइंड आउट गाइस, बिकॉज we know by virtue of what we have been reading across all our life, after including our schooling, definitely after 8, we have been reading it all fine, and when it comes to finding out something as a technical issue, that will be really hard. We will not be able to identify, and that's the reason when a person lands up in a job or in a company, it will be something like you will have to work upon multiple level of things, and communication, सिर्फ बात करना और suitable words की usage, इन दोनों में बहुत फ़र्क है फ्रेंड्स। आप देखते होंगे कि बहुत बार आपको आप कम्युनिकेशन, आप घर पे बात करते हो, आप बाहर बात करते हो, कहीं पे भी बात करते हो, we talk a lot, yes we do, but हमें शायद कई बार ये नहीं पता लग पाता that what is the right aspect or what is the right usage of words when we would like to talk in a formal structures. Formal structures में हमें कैसे बात करनी चाहिए, क्या लहजा होना चाहिए, what should be the tone, what should be the pitch, वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन के क्या लाइन ऑफ थॉट्स हैं, वाई अ रिपोर्ट is actually made in a certain order, why a CV should be presentable in the best possible manner, because CV is actually the personality of a person. A poorly stated or a poorly presented CV shows that how much casual a person is in his approach towards professionalism. आप बहुत बार देखोगे कईयों का CV बहुत ही poorly stated है, बहुत poor तरीके से presented है. Guys, that is what we have to understand in this particular classes. And not only this, we will discuss that how much this particular subject can help you in other subjects as well. आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते हैं, कई बार पेपर क्लियर नहीं हो पाता. Guys, you would not even believe that sometimes it's not only the correct form in which a person should be writing an answer, but a correct way of presenting it is also important. हम आंसर्स लिखते हैं बेधड़क, क्वेश्चंस का आंसर कई बार हमें पता होता है, we don't even understand what a examiner is asking. Sometimes words like discuss, sometimes word like elucidate, sometimes ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं जो कि आप पेपर के टाइम पे इतना स्ट्रेस होता है that you don't even understand that कि अगर हम पेपर को करने लगे तो कितना एक ह्यूज प्रेशर होता है. और वो पेपर जो कि एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा, द चेकर ऑफ द पेपर, वो एक पेपर को चेक करने में सिर्फ 2 से 2.5 मिनट लगाता है. एंड इन दोज 2.5 minutes वी हैव टू इंश्योर कि यार हम पेपर के अंदर क्या लिखें. आपको वो पेपर उस बंदे को दिखाना है. आप उस पेपर के अंदर कैसे कुछ लिख सकते हो कि वो एक बेस्ट पेपर बन जाए. सो दैट्स लाइक एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ गाइस. आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, एंड आई विल बी हियर थ्रू दीज क्लासेस. we will be talking a lot guys. It's not to make you understand English. आप सब लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हो. बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है इंग्लिश को जानना, बाय वर्च्यू ऑफ नॉट सो रीडिंग. हम इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बट जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए वो ईज़ी
वो इजीली कैप्चर कर लेते हैं थॉट को. एक थॉट को कैप्चर करना माइंड में और उसे पेपर पे लिखना दो अलग अलग चीज़ें हैं गाइस. समटाइम्स यू थिंक I was really knowing this thing very well, but I couldn't write the answer in a complete manner. And the fact remains one, I was not having a correct vocabulary for it. I was not even knowing कि in the brink of the hour वो कौन सी चीज़ थी यार, and it just skipped out of my mind. So guys, these classes are to make you well equipped. Why or how this particular English, you can say English classes, but it's the scope to it is only driven to business correspondence and reporting, but we will be discussing a lot in these classes. Why or how can we actually improve in terms of writing a good answer? What will be the different aspects of paper? We will be discussing those as well, and how well to understand that thing through practical scenarios. We will be doing all that stuff in these classes, guys, to make you well equipped of what is really required from a paper perspective. Paper तो आप clear कर ही लेंगे ज़रूर, for sure. And I will definitely ensure कि आप इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें सीखें, so that professionally आप एक बहुत बेहतर प्रोफेशनल बन सके. Yes, indeed, definitely. So अगर हम छोटी छोटी एक छोटे ब्रीफ मैं हर किसी के बारे में देता जाऊँगा. जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप why there is a need for communication, business communications कैसा होना चाहिए, what will be the different aspect of communication, different types of communication, different barriers to communication, and how can we ensure that there could be a better communication happens. और आप देखेंगे कि वाकई में ये चीज़ बहुत ही बड़ा impact लेके आती है. When you really talk to somebody, see, English is a most usable commercial language. आप किसी से बात करते हो, आप किसी से इंटरव्यू देने जाते, आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, आप बुक रेफर करते हो, कुछ भी देखते हो, कुछ भी लिखते हो, आप देखोगे बहुत जगह पर इंग्लिश का यूसेज है. Then why not we prepare for this particular language? Why not we explore ourselves to the maximum? And this subject is really interesting, guys. इसके अंदर कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है, कुछ टेक्निकल जार्गन्स नहीं है जिसके लिए हमने अपने आप को बहुत बर्डनसम कर लेना. It's not, absolutely not to that level ever. It's a very general subject. We will discuss about it. And so again, coming back to the contents, communication के अंदर वो सारी चीज़ें हम discuss करेंगे. Why there is a need for communication, how can we make a good communication, barriers, and how to get rid of the barriers of communication. Then a small portion of vocabulary जो कि second part में आती है, sentence types, and direct, indirect, active, passive speech. It's a very easy part, not something, but we will be discussing through a detailed level of grammar. कि आप grammatically कैसे उसे, अगर आप correct हो तो आप बहुत easily ये चीज़ कर लेंगे. So the second one is also very easy. Number 3 is vocabulary. Guys, vocabulary के लिए I would suggest you that you should try to read as much as possible. आप जितना पढ़ेंगे आपकी vocabulary उतनी अच्छी होगी. ये आपको बहुत लोगों ने शायद कहा भी होगा, अगर नहीं तो आप इस चीज़ पे काम करना ज़रूर शुरू करें. Because the moment you think about it that you have to increase or you have to improve your vocabulary, guys, it's easy, and you should be trying it very. You should have actually
tried at a very big level very early, बट अभी भी देर नहीं हुई है. बहुत कुछ आपको ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है. आप 15-20 मिनट्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ें. कोई भी चीज़ आप पढ़ें. अगर आपको लगता है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, नॉट अ प्रॉब्लम. आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश की बुक्स पढ़ें. वो 15-20 मिनट्स जो आप देंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश, हाउ अ फ्लो ऑफ इंग्लिश वर्क्स इन एनी रिटन मीडियम, हाउ पर्सन बेसिक्स ऑफ राइटिंग ऐसी चीज़ है जो कि हम जनरली सोचते हैं यार अगर हमें खुद से कुछ लिखना है तो हम वाकई में क्या लिख पाएंगे. बट बिलीव मी गाइस, अब जितना अच्छा और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू राइट ऑन एनी आस्पेक्ट. And we'll definitely be discussing that in our classes. Sure. Then comes fourth, that's comprehension passage. हमने किया हुआ. There will be passage, there will be couple of questions underneath. उन question उस passage को पढ़ के उन question का answer करना है. Note making, again we have done it in our school level. It's a very easy thing. We will discuss that. Introduction to basics of writing, जो कि मैं आपको बता रहा था. It's very easy to do. The only aspect is that the more you read, it will actually be very beneficial for you for writing any kind of a thing, because there is a gap or there is a catch for vocabulary. Vocabulary आपकी पढ़ने से अच्छी होगी. आप अगर आप कर सकते हैं, you can try एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, 10 रुपीज़ की आएगी. And whatever you read on a daily basis, 15-20 मिनट्स के लिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. न्यूज़पेपर को आप थोड़ा बहुत पढ़ें और आप उसके अंदर वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स लिख लीजिए एंड गो बैक टू द न्यूज़पेपर जहाँ से आपने वो वर्ड लिया है, सो दैट जब उसका वो मीनिंग आप उस सेंटेंस में देखेंगे, उस वर्ड का यूसेज उस सेंटेंस में कैसा हुआ है, इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर होराइजन गाइस. आपको वही चीज़ समझनी है कि आप कितना बेहतर, कितना इजी है इस चीज़ को करना, और उससे भी ज़्यादा इजी है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना. आप इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड लेट मी नो इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम. विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स. देन वी हैव प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग इज़ अ वेरी ईजी थिंग. इट्स समथिंग लाइक किसी चीज़ को प्रिसाइज करके लिखना. तो जनरली क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को आपने 1/3 लेवल पे लेके आना है, एंड just to make it more on a precise manner. We will discuss that when we will be doing this particular concept. Article writing. There will be a question which will be given for paper के अंदर कि आपको एक article लिखना है. Again, article writing is something which is self-driven. और आप जितना पढ़ोगे आप उतना better एक article लिख सकते हो. We'll discuss that when we will be doing this particular concept. Report writing, guys, report writing is something which is actually writing down report on particular content. So जब आप report writing करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे factual चीज़ें हैं जो कि आपको capture करनी होती है. एक प्रोफेशनल सिनेरियो में जब हम उसे करते हैं तो वो कैसे होता है, और वही चीज़ हमने रेप्लिकेट करनी है इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर. विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन गेट इनटू अ गुड रिपोर्ट और हाउ अ गुड रिपोर्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड. क्या राइटिंग फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन. इट्स वेरी सिंपल. राइटिंग, आपने लेटर लिखा होगा बहुत बार, बट लेटर को किस तरीके से आप लिखें. देखिए, कम्युनिकेशन, मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कम्युनिकेशन, और इस वर्ड को यूज़ करने का एक मतलब है कि आप कोई भी चीज़ लिखें या बोलें, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चैप्टर है ना कम्युनिकेशन, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर आप ये सीख गए कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एक टारगेट ऑडियंस के लिए जो आप करते हैं, और वो मैसेज एग्जैक्टली कन्वे हो जाए जैसा आप चाहते हैं,
आप समझ लीजिए आपने कम्युनिकेशन की इस आर्ट को मास्टर कर लिया, एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट यू टू डू गाइस, कि आप रिटन हो, वर्बल हो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन है, आप बेस्ट टू बेस्ट हो जाए इसके अंदर, राइट? Official communication, we'll discuss what are the different forms of official communication. Okay, and then comes writing formal mails. Yes, दो पेपर के अंदर इसका पार्ट बहुत कम रहता है, बट आपको फॉर्मल ईमेल्स लिखने का एक तरीका मैं आपको हम डिस्कस करेंगे. Writing formal emails are really easy, but it's just a matter of how, you know, when we speak, there's a pitch. जिस पेस पे हम बोल रहे हैं, जिस स्पीड पे, जिस वॉल्यूम पे हम बोल रहे हैं, इसे पिच कहते हैं. दैट्स अ वर्बल पिच. और इस पिच और टोन से आप किसी का कम्युनिकेशन से आप ये बता सकते हो कि वो इंसान वाकई में ही मीन करता है उस चीज़ को कि नहीं. और वही चीज़ एक रिटन कम्युनिकेशन में होती है. रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि वो कम्युनिकेशंस, the person who is sending out a message or writing an email, how much that person is good enough. वो बेहतर उस बंदे ने वो ईमेल के अंदर ज़रिए जो लिखा है, क्या वो वही लिखना चाहता था या उसका कुछ और मतलब था. बिकॉज when you are writing down something ना, you have to ensure कि आपका जो एस्पेक्ट है एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने का, that is your emotional content, that actually goes well with the email, that actually goes well with the message, then only a communication will get complete. And that is all those aspects we were discussing in this particular thing. Resume writing, yes guys, we were discussing how well you can construct a good resume. अक्सर रिज्यूमे में लिखते हुए कितनी आसानी से हम कई चीज़ें गलत कर लेते हैं. एंड वी विल डिस्कस दैट हाउ वेल वी कैन गेट अ गुड रिज्यूमे कनेक्टेड. देन कम्स मीटिंग्स. यस, आप मीटिंग्स के ऊपर अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल नहीं आया पेपर में, बट अगर हम मीटिंग्स एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में आप मीटिंग्स को कैसे कन्वे करते हैं, आप मीटिंग्स के अंदर किस तरीके से जाते हैं, पर्टिकुलर मीटिंग्स, फॉर्मल मीटिंग्स जो होती हैं उनके एजेंडा कैसे होते हैं, एक मीटिंग के अंदर आप बाय एजेंडा आपको किस तरीके से बोलना चाहिए, all that thing we were discussing guys, so that to make it more constructive. And that is maximum which I think we will be, there's a lot more we will be doing it in this subject, but we will be needing your support because I want आप जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, आप जितना अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे in understanding this particular subject, ये भूल जाइए कि इंग्लिश आपके लिए डिफ़िकल्ट है करना. इट विल बी वेरी इजी गाइज. हम दोनों मिल के इसे इंश्योर कर लेंगे कि इसके अंदर की आपके अंदर की जितने गैप्स हैं इंग्लिश को लेकर जो एप्रीहेंशंस हैं वो सारी दूर हो जाए, ताकि आप इस सब्जेक्ट के ज़रिए बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे कर सके. Thank you so much. This was all from my side, and we will be discussing a lot more in our next coming classes. Thanks.